Namaskar, good evening viewers. You are watching Sansad TV and this is House Highlights with me, Rajiv Kumar Singh. We get you the details of the proceedings of both the houses, Lok Sabha and Rajya Sabha, which assemble at 2 p.m. today instead of 11 a.m. in the morning in view of the swearing-in ceremony of President Draupadi Murmu. Before we bring you the details, a look at the headlines. Draupadi Murmu sworn in as 15th President of India in a grand ceremony at the historic Central Hall of Parliament. 4 Congress members are suspended for the rest of the session. In Lok Sabha, Speaker Om Birla takes a stern view of continuous disruptions by opposition MPs. Lok Sabha takes up questions related to Indian Institute of Heritage and Accreditation System for colleges, universities during question hour. Upper House takes up discussion on the Weapons of Mass Destruction Amendment Bill. Now, news in detail. Draupadi Murmu was sworn in as India's 15th President in a grand ceremony at the historic Central Hall of Parliament. Hailing from the Santhal community, Murmu is the first tribal leader to assume office of the President. She was administered oath of office and secrecy by Chief Justice of India, N.V. Ramana. She took up oath in Hindi to preserve, protect and defend the Constitution and the law. Murmu was given a 21-gun salute, after which she signed the oath register amid a thunderous applause. Vice President M. Venkaiah Naidu, Prime Minister Narendra Modi, Lok Sabha Speaker Om Birla, among others, were present on the occasion. In her first address, Draupadi Murmu reiterated her resolve of working towards upliftment of marginalized and empowerment of women and youths for the inclusive growth of the country. The spirit of welfare of the world, it always... मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगी। Ahead of the swearing-in ceremony, Murmu arrived at the Rashtrapati Bhavan, where she was welcomed by the outgoing President Ram Nath Kovind. The two then arrived at the Parliament in a procession. News now from the lower house of the Parliament. 4 Congress Lok Sabha members were suspended for the rest of the session on Monday after Speaker Om Birla took a stern view of the continuous disruptions by opposition MPs since the beginning of the monsoon session. As the protesting opposition members again stalled Lok Sabha proceedings on Monday, the chair named Congress MPs Manikam Tagore, T.N. Pratapan, Jyoti Mani and Ramya Haridas. कुछ माननीय सदस्य निरंतर प्ले कार्ड आसन के सामने दिखा रहे हैं जो सदन की मर्यादा के अनुकूल नहीं है। माननीय स्पीकर महोदय ने भी इस संबंध में आपको चेतावनी दी थी। मैं उसको दोहरा रहा हूं, चेयर के पास कोई विकल्प नहीं होगा कि वो आपके नाम नेम करे। कृपा करके इस चेतावनी का ध्यान रखें और किसी भी प्रकार के प्लेकार्ड न दिखाएं। मैं नियम 374 के अंतर्गत हठपूर्वक और जानबूझकर लगातार सभा के कार्य में बाधा डालकर अध्यक्ष पीठ के प्राधिकार की उपेक्षा करने और सभा के नियमों का दुरुपयोग करने के लिए आप सभी का नाम लेता हूं। श्री मणिकम टैगोर जी, श्री T.N. प्रतापन जी, सुश्री ज्योतिमणि जी, सुश्री रामया हरिदास जी। Parliamentary Affairs Minister Prahlad Joshi then moved a resolution to suspend the 4 Congress MPs for the rest of the session. This House, having taken serious note of the misconduct of Sri Manikam Tagore, Sri T.N. Pratapan, Ms. Jyoti Mani and Ms. Ramya Haridas and
utter disregard to the House and the authority of the chair, and having been named by Honorable Chairman Speaker, resolve that the above mentioned members be suspended from the service of the House for the remainder of the session under Rule 374 subclause 2. The House then passed the resolution by a voice vote, and Rajendra Agarwal, who was chairing the proceedings, announced their suspension. He later adjourned the proceedings for the rest of the day. प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है कि श्री मणिकम टैगोर, श्री टी.एन. प्रतापन, सुश्री ज्योतिमणि, सुश्री रामैया हरदास, जो इस सभा के सदस्य को सत्र की शेष अवधि के लिए सभा की सेवा से निलंबित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सदस्यों को तदनुसार सत्र की शेष अवधि के लिए सभा की सेवा से निलंबित किया जाता है। वे तत्काल सभा के परिसर से बाहर चले जाएं। सभा की कार्यवाही मंगलवार दिनांक 26 जुलाई 2022 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। Earlier, Speaker Om Birla had warned the protesting members, including from the Congress, TMC and DMK, that those who continue to shout slogans and display placards will have to do it outside the House after 3 p.m. TMC MPs who were part of the protesting opposition parties until 2 p.m. did not join the protests after the House assembled at 3 p.m. As the other opposition members continued to protest, Speaker Birla told them that the government was ready to discuss issues raised by them and stressed that people want the House to function. 3 बजे बाद तख्तियां और नारे लगाने का अधिकार आपको सदन से बाहर होगा। इस तरीके से सदन नहीं चल सकता। देश की जनता चाहती है सदन चले, और इसलिए मेरा आग्रह, अंतिम बार आग्रह कर रहा हूं कि 3 बजे बाद जो माननीय सदस्य आसन के सामने तख्तियां लाकर सदन की मर्यादा तोड़ना चाहते हैं, 3 बजे बाद उनको पर्याप्त समय, पर्याप्त मौका सदन के बाहर मिलेगा। धन्यवाद। Amid the din questions related to Indian Institute of Heritage and accreditation system for colleges, universities were taken up during question hour in Lok Sabha. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस दिशा में अभूतपूर्व काम किया है। नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, प्रसाद और स्वदेश दर्शन योजना इसका जीवंत उदाहरण है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, लेकिन सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्रदान करने के लिए भारतीय विरासत संस्थान और विरासत पाठ्यक्रम की हमें अत्यंत आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय संस्कृति मंत्री महोदय जी से ये जानना चाहती हूँ कि क्या हमारी सरकार ने भारतीय विरासत संस्थान की स्थापना की है, और अगर की है तो इस संस्थान के द्वारा किए जाने वाले कार्य और इसका पाठ्यक्रम क्या है। अध्यक्ष महोदय, 2020-21 में बजट घोषणा थी जिसके आधार पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज की स्थापना की गई है। इससे पहले नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट इस काम को देखा करती थी, लेकिन 2020-21 से बजट घोषणा के बाद हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज की स्थापना की है। उसके तहत 3 तरह के कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। पहला, हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स में कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं, म्यूजियोलॉजी में कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं, कंजर्वेशन में कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। ये सर्टिफिकेट कोर्स भी हैं, पीएचडी भी होती है, डिग्री भी इसमें दी जाती है। Sir, as the Honourable Minister pointed out in his answer, that National Accreditation Council, NAC, will be overseeing the process of accreditation under the NEP. This will indeed ensure that the process of accreditation is easier to comply with and more institutions can be formally recognized. Sir, through you, I would like to ask the Honourable Minister, how does the government plan to provide
certain safeguards to ensure that higher education institutions comply with the norms of self-governance and disclose relevant information in order to maintain the standard and quality of education in the country. In the national education policy, which has been launched under the dynamic leadership of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, in so many paras, there is written on the accreditation and the quality of the institutions so that they can get autonomy. Whenever their assessment, they will get more than 3.01, they will get towards autonomy. And in this way, our government is very much keen to giving the education institutions for autonomy. NAC has already involved 7 criteria of framework. These are the curricular aspects, teaching, learning and evaluation, research, innovation and extension, infrastructure and learning resources, student support and propagation. Lok Sabha also took up matters of urgent public importance under Rule 377 on Monday. कोरोना काल के पूर्व सिवनी, बानापुरा, खिरकिया सहित आसपास के सभी रेलवे स्टेशन पर नागपुर भुसावल सुपरफास्ट ट्रेन का स्टॉपेज था, लेकिन कोविड के बाद या क्षेत्रीय जनों की लगातार मांग करने के बाद इसका आवागमन बंद है। मेरा अनुरोध है इस ट्रेन को दोबारा शुरू करके सारे स्टॉपेज चालू किए जाएं। Kalburgi has 2 universities and is the center of the only Central University of Karnataka. Kalburgi also has 3 engineering college, a government medical college, ESI medical college, a private medical college, a fine art college, several pharmacy college and degree colleges. But all the above institutions lack sports center with the importance and benefit of sports education in Kalburgi being highly felt. The establishment of a sports college in Kalburgi is in the great demand. Therefore, it is requested to establish a national level sports college in Kalburgi for the benefit of the people of Hyderabad, Karnataka. देश में ऐसे अनेक लोग हैं जो स्वेच्छा से ब्लड डोनेशन करते हैं, किंतु जब वे अपने कार्ड को आवश्यकता पड़ने पर उपयोग करना चाहते हैं तो अनेक हॉस्पिटल यह कहकर उसे स्वीकार नहीं करते कि यह कार्ड उनके यहाँ का नहीं है। ऐसे में रोगी के परिजनों के समक्ष विकट समस्या उत्पन्न हो जाती है। मेरा सरकार से निवेदन है कि वह ब्लड डोनेशन करने वाले लोगों को एक यूनिवर्सल ब्लड डोनेशन कार्ड जारी करें। We'll take a short break here and be right back with more session updates. Welcome back. This is House Highlights. Now moving on to Rajya Sabha. The Rajya Sabha on Monday also assembled at 2 p.m. instead of 11 a.m. in the morning in view of the swearing-in ceremony of President Draupadi Murmu. But the proceedings were adjourned till 4 p.m. after unrelenting protests by opposition members seeking a discussion on price rise. When the House reassembled at 3 p.m., Sambit Patra, who was chairing the proceedings, invited NCP leader Fauzia Khan to initiate a debate on the calling attention motion on the situation out of rising cases of post-COVID complications. But the opposition members, including the Congress and TMC, continued their protest. Earlier, as the House met at 2 p.m., the opposition parties insisted on suspension of scheduled business and taking up of discussion on inflation.
However, Deputy Chairman Harivansh said the House would take up calling attention motion on the situation arising out of rising case of the post-COVID complications. Protests by the opposition continued, forcing the Deputy Chairman to adjourn the House proceedings until 3 p.m. Before adjournment of the House, leader of the opposition and Congress leader Mallikarjun Kharge charged that the Treasury benches were running away from holding discussions on the important issues of price rise. To this, leader of the House Piyush Goyal said the government wants to have discussion on this issue. अब ये आज का 6वां दिन है, हम बार बार इस सदन में अपना इन्फ्लेशन के बारे में, प्राइस राइज के बारे में, महंगाई के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। इसीलिए तो हम 267 के तहत नोटिस दिए। हम ये बहुत बड़ा मुद्दा है देश के लिए और सारे जनता के लिए, और सरकार इस मुद्दे को चर्चा से क्यों भाग रही है? प्लीज क्यों चर्चा नहीं करना? दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि सरकार की बात अब रिकॉर्ड पे जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि हम चर्चा चाहते हैं, सार्थक चर्चा चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो भी सदन की और देश की भावनाएं हैं उसमें बड़ी विस्तार से चर्चा। माननीय वित्त मंत्री कोविड से बीमार हैं, जैसे ही माननीय वित्त मंत्री जी इस चर्चा में भाग ले, वो सदन की भावनाएं भी सुनना चाहती है। वित्त मंत्री इस पे पूरी गंभीरता से उसका जवाब दे सके। The upper house on Monday took up discussion on the weapons of mass destruction and their delivery systems, Prohibition of Unlawful Activities Amendment Bill 2022. The bill bars persons from financing any prohibited activity related to weapons of mass destruction and their delivery systems. So this has become necessary because of the Financial Action Task Force, which requires new safeguards to be introduced in the acts for being able to control financing of mass destruction activities in our territory. So the 12A2, the new insertion, it allows the government, it gives the government the power to freeze, seize or attach funds or other financial assets or economic resources. The UN, who I hope these gentlemen honor, because this amendment bill is pursuant to our international obligations as laid down. They should at least respect the UN. But sir, in response to these apprehensions, the UN Security Council in 2004 passed Resolution 1540 when it called upon all member states to enact laws for the purpose of prohibiting activity pertaining to weapons of mass destruction. Weapons of mass destruction being nuclear weapons, other nuclear devices, biological weapons and chemical weapons. शुक्र है कि वहाँ पर जो केमिकल यूज किया गया वो बहुत पुअर क्वालिटी का था। अगर वो अच्छी क्वालिटी का होता तो वहाँ पर तबाही मच जाती। इसी तरह 9/11 अमेरिका पर जो हमला हुआ, अभी अमेरिका उससे उभर ही रहा था कि लोगों के घरों में लेटर आने शुरू हुए और जो उसे खोलता था वह मर जाता था, क्योंकि उसमें एक ऐसा केमिकल था, जैसे उस लेटर को खोला जाता था व्यक्ति बेहोश हो जाता था और वो मर जाता था। ऐसा भारत में भी हो सकता है। और इस संसद के बाहर भी वर्ष 2001 में आतंकवादियों ने हमला किया था। जब भी टेररिस्ट के हाथ वेपन्स आते हैं वे उनका दुरुपयोग करके भारत में, चाहे वो संसद हो या मुंबई या दुनिया का कोई और देश हो, आतंकवादियों द्वारा इन वेपन्स का इस्तेमाल करने के बाद लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। World
not only India is concerned about mass destruction weapons which should not reach the wrong person's hands, sir. That is exactly the purpose of this bill, sir. We have also seen terrorism in many high technologies, sir, destroying human life, peace in the economy of the nation, sir. We should be aware that the terrorism should not take form in chemical, biological and nuclear way of destruction, sir. Already there is a big doubt regarding COVID-19, sir. How it came, why it came, for what purpose it happened. It's still a doubt in the people of the world's minds, sir. भारतीय लोकतंत्र की परंपरा रही है, इस सदन की परंपरा रही है कि अगर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है, भारत की संप्रभुता से जुड़ा हुआ विषय है, भारत की एकता और अखंडता से जुड़ा हुआ विषय है, तो हम तमाम अपने राजनीतिक मतभेदों को दरकिनार करके हमेशा एकजुट रहे हैं। The upper house on Monday congratulated athlete Neeraj Chopra. The reigning Olympic champion created history after becoming the first ever Indian athlete to win a silver at the World Athletics Championships with his best effort of 88.13 meter in javelin to etch his name in the record books. On behalf of the whole house and on my own behalf, I congratulate Sri Neeraj Chopra for winning silver medal in the javelin throw at the World Athletics Championship 2022 held at Eugene in Oregon of United States of America. With his remarkable performance by landing his javelin at 88.130 meters, Olympic champion Sri Neeraj Chopra has improved his Olympic record and scripted yet another glorious chapter in the history of Indian athletes by becoming the first Indian to win a silver medal at the World Athletics Championship. By his spectacular performance, he has ended a 19-year-long wait for a medal for the country. Legendary musician Rajya took oath as a Rajya Sabha MP today. Rajya was nominated to the upper house earlier this month. மாநிலங்களவையின் உறுப்பினராக நியமிக்கப்பட்டிருக்கும் இளையராஜா என்னும் நான் சட்டத்தினால் நிறுவப்பட்டதான இந்திய அரசியல் சட்டத்தின் மீது உண்மையான பற்றார்வமும் பற்றுறுதியும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்தியாவின் இறையாண்மையையும் ஒருமைப்பாட்டையும் உறுதியாக பற்றி நிற்பேன் என்றும் நான் இப்போது ஏற்கவிருக்கும் கடமையினை நேர்மையாக நிறைவேற்றுவேன் என்றும் கடவுளின் பெயரால் ஆணையிட்டு கூறுகிறேன். That's all we have in today's bulletin. For daily updates of the Parliament news, keep watching Sansad TV. Good night.